Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 17th chapter of class 5th. This chapter name is the Prairies Temperate Grassland. Temperate Grassland के बारे में हम पढ़ेंगे. The lesson plan points are location and land, climate, people and their life. Self-survey question. The major grassland of the world are. Major grassland दे रखी है जैसे नॉर्थ अमेरिका में पेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पर, रशिया स्टेप्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, साउथ अमेरिका विल्ड. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टेम्परेट मीन्स मॉडरेट. टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट. द चेंजेस इन द टेम्परेट जोन बिटवीन समर एंड विंटर आर नॉट एक्सट्रीम. जो टेम्परेचर होता चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो समर और विंटर में नॉट एक्सट्रीम नहीं होता है. नॉर बर्निंग हॉट नॉर फ्रीजिंग कोल्ड. ना तो बर्निंग हॉट होता है ना फ्रीजिंग कोल्ड. ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा नहीं होता है. द टेम्परेट रीजन हैव 4 सीजन. टेम्परेट रीजन में 4 सीजन होते हैं, समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम. The next is location and land. Location and land हम पढ़ते हैं. The temperate grassland are vast grassland between latitude 23.5 degree north and 66.5 degree north and 23.5 degree south and 66.5 degree south. The grassland is different continent and are known by different name. जो grassland है different continent में वो जाने जाते हैं different name से. In Asia they are known as the steppes. एशिया में ये steppe के नाम से जाने जाते हैं. In Africa they are known as wets. अफ्रीका में wets के नाम से जाने जाते हैं. In South America they are known as pampas and in North America they are known as prairies. The grassland in Australia are called down. जो grassland है ऑस्ट्रेलिया में उनको downs बोलते हैं. There are some land on the earth that have an extreme climate and less rainfall. कुछ lands है अर्थ पर जिसमें extreme climate है और less rainfall होती है. The tall grasses grow in such region. जो tall grasses हैं इस region में grow करती है. Grassland are large plain covered with grass. Grassland large plain होता है जो grass से covered होता है. There are very few tree and bushes. यहाँ पर बहुत कम tree और bushes होते हैं. Most of the grassland are found in the temperate zone and are known by the different name in the different continent. जो grassland होते हैं ज्यादा grassland वो मिलते हैं temperate zone में और जाने जाते हैं अलग अलग नाम से अलग अलग continent में. There are vast plain covered with grass in North America known as the prairies. Mississippi and Missouri are two most popular river of the world. Mississippi और Missouri दो popular river है world में. They pass through the prairies. ये pass करती है prairies के through. They are the biggest source of irrigation for the grass. ये biggest source है irrigation की इन grass के लिए. Climate. The climate of the prairies is warm and sometimes windy. जो climate होता है prairies का वो warm होता है, कभी-कभी windy भी होता है. The summers are hot and the winters are cold in the prairies. Summers hot होती है, winters cold होते हैं prairies में. There is a moderate rainfall that occurs in this region during the summer season. Moderate rainfall होता है जो occur करता है season में summer season में. Grass grow very quickly during the spring season. Grass बहुत जल्दी grow करती है spring season में. As autumn occurs, the grass turn its into hay. Autumn season में grass change जाती है hay में. Did you know the North temperate zone includes the Great Britain, Europe, Northern Asia, North America and Northern Mexico. The South temperate zone include Southern Australia, New Zealand, South America and South Africa. People and their life. लोग और उनकी life कैसी होती है वहां पर. In early times, European settlers converted the farming land into his farmland. The farmers look after the farmland. जो farmers थे वो देखते थे farmland को. They lived near the farms with their families in cottage. वो farm के पास ही रहते थे अपनी families के साथ cottage में. The workers who work in these farmland are also live near the farm. जो वर्कर्स होते थे वो भी फार्म के पास ही रहते थे. द कॉटेज इन विच दे लिव इज नोन एज होमस्टेड. जो कॉटेज जिसमें वो रहते थे उनको होमस्टेड बोलते हैं. देयर आर सेपरेट शेड फॉर द कैटल and for keeping machinery used in the farm. Separate shed होते थे जहां पर cattle रहते थे और जहां पर मशीनरी रहती थी. At present the land covered by prairies is inventively cultivated for corn in the eastern part, wheat in the central part and cattle rearing in the western part. अब present में जो land है वो cover हो गई है prairies से cultivated की है corn eastern part में, wheat central part में और cattle rearing western part में. Crop like barley,
hay, oats and some healthy grasses are also grown into the prairies. ये कुछ healthy grasses हैं जो grow करती हैं prairies में. Wheat is produced in large quantity for the natives as well as for export. Wheat यहाँ पर produce होता है large quantity में, natives के लिए भी और export के लिए भी. Hence it is known as the wheat basket of the world. इसलिए इसको wheat basket of the world भी बोला जाता है. At present, due to improvement in the technology, machines are used to do the various tasks of the farm. जैसे कि इंप्रूवमेंट हुआ है प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी का, तो मशीन यूज की जाती है वेरियस टास्क करने के लिए फार्मिंग में, जैसे प्लॉगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेस्टिंग एंड विनोइंग. द फूड ग्रेन विच आर फार्मर ग्रो एंड हार्वेस्ट आर स्टोर्ड इन किलोज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. एनिमल्स आर रेयर्ड इन लार्ज ओपन एरिया ऑफ फार्म. एनिमल को रेयर किया जाता है, पाला जाता है लार्ज ओपन एरिया में फार्म के. दीज आर known as ranches. The farmers living in the prairies are rich due to the improvement of technology and the bulk production. जो farmers होते हैं वहां पर रहते हैं वो rich होते हैं क्योंकि improvement of technology की वजह से और bulk production की वजह से. They live with their families with all the modern comfort and facilities. वो अपनी family के साथ रहते हैं modern comfort और facilities में. They lead a luxurious life. वो luxurious life जी रहे हैं. Some of the farmer rear cattle for milk and milk product. कुछ farmer rear करते हैं cattles को उनके milk और milk product के लिए. They have dairy farm in the cities and provide dairy. इनके dairy farm होते हैं cities में और dairy provide करते हैं. Product to the people living in cities. इसको लोग जो शहरों में रहते हैं. Many minerals are also found in the prairies. There are mines of lignite, coal and mineral oil. यहाँ पर mines है lignite और coal की और mineral oil की. Oil refineries and ore crushing factories are also built in this prairies. जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और क्रशिंग फैक्ट्रीज है वो भी यहाँ पर बनी हुई है. द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्रीज आर द फ्लोर मिल्स. जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्री है वो फ्लोर मिल है. हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज इंक्रीज ईयर बाय ईयर. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. फार्म ऑफ प्रेरीज है यहाँ पर मशीन हार्वेस्टिंग. द फार्म मशीन हार्वेस्ट कर रही है फार्म को. डेयरी फार्म इन द सिटीज नियर प्रेरीज. नाउ बीवर्डी एग्रीकल्चर द साइंस ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग मॉडरेट द क्लाइमेट which is neither hot nor too cold. Grassland, a large area of land covered with wild grass. Now quick brush up. The temperate region have four season. Temperate region में 4 season होते हैं: summer, winter, spring and autumn. The grassland is different continent are known by the different name. Grassland are large plain covered with grass. The climate of the prairies is warm and sometimes windy. The cottage in which farmers live is known as the homestead. Now it's time to practice. Take right the correct option. The grassland of North America is known as prairies. The summer are hot and the winter are cold in prairies. The grassland in Australia are called downs. Crops grown in prairies are barley, rye, oats, all of these. In Africa, grassland are known as velds. Now fill in the blanks. Animals are reared open area of farm called ranches. These are largest plain covered with grassland. The climate of the prairies are sometimes windy. Dash and Dash are the two most popular river of the world, Mississippi and Missouri. Dash is known as the wheat basket of the world, prairies. Now true false. The temperate region have 5 seasons. This is false. The climate of prairies is extremely hot. False. Cottages in which the farmers live are called homestead. This is true. Steepies are known as the wheat basket of the world. False. Animals in large open are called ranches. This is true. Now answer the following question. The first question is, where is the prairies located? तो इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक. कंप्लीट आप यहां से यहां तक करेंगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the 2 most popular river of the world by which it passed through. Mississippi and Missouri.
Mississippi and Missouri are the two most popular river in the world. They passes through the prairies. Come to the next question. Explain the life of the people in prairies. Life कैसी होती है, explain करना है. यहां से यहां तक करेंगे. Come to the next question. What are how is the climate of the prairies? Climate कैसा होता है? तो climate हमने भी the climate of prairies is warm and sometimes windy. The summer are hot and the winter are cold in the prairies. Next question is, what are ranges and where are they located? इसका आंसर आएगा animals are reared in large open area of farm. These areas are known as ranches. Come to the next point. The next is activity time. Brain boggler. How many countries belong to the temperate zone? Now the next is subject enrichment. Collect information about the climate, flora and fauna, industries and occupation in other grassland region of the world and discuss the common factors that influence the life of the people there. Information collect करनी है आपको climate की, flora and fauna की, industries of occupation, other grassland regions में पूरे world के, और उसमें common factors आपको discuss करने हैं that influence the life of people there, जो वहां पे लोगों की life को influence करते हैं. On the political map of world, mark the location of prairies. यहाँ पर आपको अदर कलर से, अलग अलग कलर से prairies के पार्ट को मार्क करना है. Now subject interlinking, take map of the world and mark the major temperature grassland of the world on it. एक मैप लेना है वर्ड का, उसमें मार्क करना है मेजर टेम्परेचर ग्रासलैंड को पूरे वर्ड के. राइट द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट इन कैपिटल लेटर एंड द नेम ऑफ ग्रासलैंड इन स्मॉल लेटर. आपको क्या करना है, कॉन्टिनेंट के को तो कैपिटल लेटर से लिखना है, ग्रासलैंड को नेम को आपको स्मॉल लेटर से लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.